हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम टू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट वी यूज हेडर फाइल hashtag include stdio.h. Now we use int main open close parenthesis and curly braces. First we assign the values integer I comma j and write a array int matrix. Data type int and name of array is matrix. Number of rows in 3 and number of columns is also 3 in our matrix. Now we write a printf function to enter a matrix. Enter a matrix. Now we use a loop to take input for I equal 0. Here I is changed for the number of rows and he अपने number of rows है यहाँ पे 3, तो I is less than 3 and I plus plus. Here फ्रेंड्स हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। हमारा I स्टैंड करता था फॉर नंबर ऑफ रोज एंड हमारा J स्टैंड करेगा फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। J plus plus and here we use our scanf function %g and matrix I and j terminate it। फ्रेंड्स ये लूप हमने क्रिएट करा था to take input. Now we have write a second loop. This loop we create to give input and to take output. ये था to give input देने के लिए कंप्यूटर में, और अब ये जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे आउटपुट लेने के लिए। This program for take output. Now we start to write it. 1 minute. 4 I equal j 0, I less than 3 and I plus plus एंड नेस्टेड लूप है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ रोज के लिए हो गया, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए फिर से। Here we print our matrix allocate %g में स्पेस जितना आप दोगे उतना आपके मैट्रिक्स में स्पेस आएगा एंड प्लीज स्पेस दीजिएगा। एंड हियर वी राइट मैट्रिक्स I कॉमा मैट्रिक्स J एंड फ्रेंड्स इसके बाहर हम लिखेंगे प्रिंट f \n to take the next line and our final could return 0 and save this file. Now we take output. Write our matrix 1 2 9 and here is the output friends. Thank you friends. This is our program.